Right. So in previous lecture we have started with the IEEE 802.15.4e and IEEE 802.15.4g. So these are the amendments. So these are nothing but the small changes that are going to be made as per the requirement to the original 802.15.4. Okay. So this will expand. So 802.4e as well as the G are going to expand the MAC layer features to provides the advantages over the original implementation of 802.15.4. Okay, so it enhances the MAC capabilities in the area of a frame format, how these frames are going to be represented, how the security is going to be added, then the determination mechanism, as well as the type of a frequency hopping that they have used. Okay, and the 4G, that is 802.15.4G standard, basically focuses on the smart grid. We have seen the different applications of 802.15.4e as well as the 4G where it is going to be used, and then we have started with the alliances. So Wyson is there. Wyson is responsible for making the advertisement of 802.15.4G. So this 802.15.4G is wireless personal area network, right? The physical layer that is present into the original 802.15.4 is same, okay, but with a little bit different changes, okay, with in the 802.15.4e and 4G. So the physical layers uses the different shift keying techniques as well as multiplexing techniques for transmission of the data. Okay, for the transmission of the data. So physical layer, I think so we have discussed these things, that is what the physical layer inside of a 802.15.4 G as well as E uses the multi-rate and multi-regional frequency shift keying. Okay, so this MRFSK, so this offers the good transmit power efficiency due to the constant envelope of a transmit signal. अभी यहाँ पे पावर इफिशियंसी किया है, इसका मतलब लो पावर के ऊपर वो काम करेगा. Then the physical layer inside of 802.15.4 may also use the multi-rate and multi-regional orthogonal frequency division multiplexing. So it provides this OFDM, that is orthogonal frequency division multiplexing. It provides the higher data rates. Okay, and the last one is nothing but the multi-rate and multi-regional offset quadrature phase shift keying. So this shares the same characteristics of 802.15.4, that is 2006 OQPSK-PHY, making multi-mode system more cost effective and easier to design. So it makes the system a multi-mode. Okay, so if you just consider the MAC layer, okay, so MAC layer, अभी यहाँ पे physical layer के अंदर only only the things is that you must have to use the different shift keying mechanism as well as the multiplexing mechanism. ये अलग use किए हैं in order to transmit the data, so that may result into a low power consumption as well as the maximum data transfer. Okay. Then the MAC layer, so IEEE 802.15.4 enhancement to the MAC layer consists of the time slotted channel hopping. Okay, मेरे ख्याल से DSSS is there in the 802.15.4 original. अगर 802.15.4 आपने यूज़ किया यहाँ पे, so it uses the DSSS. Okay, DSSS for the communication purpose, while as if you just go for 802.15.4e, okay, so it uses the time slotted channel hopping. Okay, or we can say the time slotted frequency hopping. Instead of a channel you can just use the frequency, time slotted frequency hopping. So here you are just considering the small time slots. Okay, small time slots, so they can be collected together and you can have the time frame, and within that time frame you can just send the data on a multiple data on the channel itself. Okay, addition to this,
addition to the original MAC layer of 802.15.4, the 802.15.4e supports the information element. Okay, so if you just look the diagram for the MAC layer of 802.15.4, the additional thing is there, that is nothing but the information element. Okay, ये बाकी तो आपके सेम है. Frame control, that I think so we have discussed in the previous lecture. Okay, the sequence number used, the addressing field के अंदर क्या क्या रहता है ये भी देखा था हमने. Okay, then auxiliary security header is there. Okay, so it enhances the security by supporting again the AES algorithm. Okay, this is the extra field that is present inside of IEEE 802.15.4e, and that field is nothing but the information elements. And as the name, it is the information element, so it can have the information related to the data, that is nothing but the metadata kind of things is presented inside of a information element. Okay, so metadata you know, metadata is nothing but the information related to the data, what kind of a data is there inside of a frame payload. Okay, so information related to this payload, that is what the metadata is represented into the information element. Okay, then it can have the enhanced beacons. So the beacons that can have a very less frame payloads, as well as their rates are going to be changed. So due to that we can have the enhanced beacons request. Okay, as well as it can have the enhanced acknowledgement. Okay, एनहांस एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है कि एक्नॉलेजमेंट देने के लिए जो टाइम रहेगा वो कम रहने वाला है, या फिर एक्नॉलेजमेंट देते टाइम में वो मैसेज के अंदर डेटा कितना देना है. आपको ज़्यादा डेटा दिया तो उसका ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो कम रहेगा. अगर कम डेटा दे रहे हो आप, इसका मतलब वो ट्रांसमिशन उसका ट्रांसमिशन स्पीड उसका अच्छा रहेगा, कम टाइम में वो सामने सेंडर या रिसीवर के बीच में कम्युनिकेट करेगा. So that's why you can say that the 802.15.4 can have the enhanced beacons request and enhanced acknowledgement. Okay, only the difference is that, okay, you can have the extra field, that the name of the field is nothing but the information element that consists of the metadata related to the data available inside of a frame. Okay, so due to the addition of this information elements, okay, the payload may decreases, या फिर जो मैक्सिमम डेटा आप ट्रांसफ़र कर सकते हो वो थोड़ा कम हो जाएगा आपका, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन एलिमेंट यूटिलाइजेज द स्पेस ऑफ अ फ्रेम पेलोड, इवन दो इफ इट इज़ द पार्ट ऑफ ए मैक हेडर, but still it uses the size required to represent that metadata from the frame payload or the MAC payload itself. Okay, and the topology that is going to be used inside of 802.15.4e, most of the applications supports the mesh topology itself. Again, the same kind of a topology is going to be utilized into the 802.15.4, or most of the wireless kind of a communication you are going to be use the mesh topology. Security, it uses the ES with the 128-bit key, again same as that of the original implementation of the 802.15.4, and the competitive technologies for 802.15.4e as well as G is nothing but the -7. Okay, so in comparison with the original implementation of 802.15.4, okay, so if you just observe, the frame control field is there, sequence number is there, destination PAN identifier, destination address, source, ये address field ऐसे directly यहाँ पे directly यहाँ पे दे दिया address field, also addressing field. So this addressing field will consist of the source address as well as the destination PAN identifier, source PAN identifier, destination address as well as the source address. बाकी के field अगर आप देखोगे तो frame control is there, sequence number is there, addressing field is there, and we are having the frame payload.
ओके अभी इसके अंदर सिक्योरिटी ऐड करने के लिए यू हैव जस्ट मेड सम चेंजेस, और यहाँ पे जैसे आपने फ्रेम टाइप यूज़ किया था, सिक्योरिटी बीट इज गोइंग टू बी आइदर इनेबल और डिसेबल. इफ इट इज इनेबल, so auxiliary security header is going to be added over there. Okay, that we have, I think so that we have discussed into the previous lecture. Now in addition to this one, the 802.15.4e can have the extra field. That field is nothing but, okay, this is only the extra field that you must have to keep into the remind. Okay, so that extra field is nothing but the information elements, and as the field name is the information element, so it's simply having the information related to the data which is going to be transmitted, or which is going to be or which is having inside of a MAC payload. Okay, so and it giving the information related to data, so that's why it is simply known as an what, a metadata. You know the definition of the metadata. Metadata is nothing but the data about the data, or information about the data itself. Okay, so this is what. अभी ये एड्रेसिंग फील्ड वैसे के वैसा है, इसके अंदर फिर से वही है, सोर्स एड्रेस, देन सोर्स पैन नंबर, पैन आइडेंटिफिकेशन, सोर्स पैन आईडी, then destination address and destination PAN ID. उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि फ्रेम कंट्रोल के अंदर क्या क्या है. सो फ्रेम कंट्रोल विल कंसिस्ट ऑफ व्हाट, द फ्रेम कंट्रोल विल कंसिस्ट ऑफ 3 bits frame types based on the type of frame. It is whether it is the beacon frame, whether it is the data frame, whether it is the acknowledgement frame. Okay, then security, whether it is enable or disable, then frame padding, frame pending, then acknowledgement, whether it is required or not, the PAN ID, destination address mode, frame version, as well as source address mode. So all these fields are a part of your frame control. Then sequence number, it is going to be same for the communication between the sender and receiver, or one-time communication between the sender and the receiver. Okay, and all these things are going to be included into the physical frame. Okay, so the physical frame for 802.15.4G as well as E is same as that of your original implementation. So where we are having the primable start frame delimiter as well as the physical header, and उसके बाद में original data. Okay, MAC layer में उसका header as well as the data that is going to be encapsulated into the physical layer data unit. Okay, and that is known as a PSDU, physical service data unit. So this is what only the changes in the MAC layer of 802.15.4E as well as G, right? So the topology again, it works on the MAC topology. Security, the same algorithm, that is advanced encryption algorithm AES is going to be used. Okay, which uses the 128-bit key. So this is what the first AES that has been implemented and used. उसके बाद में की साइज़ अगर आप चेंज कर देते हो, दैट इज़ वॉट 256, 5 and 12, सो वो एल्गोरिदम या फिर वो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन उतना टफ हो जाता है. एंड द कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजीज, द टेक्नोलॉजीज विच आर सिमिलर टू this 802.15.4E as well as G is nothing but the -7. So this is all about your 802.15.4E as well as G. Only you must have to keep in mind that, so whatever the limitation of the original implementation of 802.15.4, okay, that is related to the low data rate as well as the power consumption, that is going to be reduced inside of 802.15.4E as well as G by using the multi-rate multi-regional frequency shift keying as well as multi-rate multi-regional orthogonal frequency division multiplexing. Okay, so that is only you must have to remind, and you must have to focus on this extra field that is present inside of the MAC layer of 802.15.4E as well as the G. Okay, so
Then the next standard is the IEEE 80 IEEE 1901.2a. So is there any difficulty related to the 802.15.4, 15.4e as well as 15.4g? Any confusion? Any question? So if no question, we'll go for the IEEE 1901.2a. कुछ क्वेश्चन है क्या, बोलो. Anyone having any question? Okay, so if the question is like that, if you want to explain the physical layer of 802.15.4e, you must have to draw the same physical layer, okay, or physical frame unit as there inside of IEEE 802.15.4. ई के लिए पूछो या जी के लिए पूछो या फिर खाली प्लेन 4 के लिए पूछो, एक ही फिजिकल यूनिट आपको ड्रॉ, फिजिकल फ्रेम टाइप एक ही आपको ड्रॉ करना है. खाली डिफरेंस किस में आएगा आपका, मैक लेयर के अंदर, बिकॉज इन द मैक लेयर वी कैन हैव वन एक्स्ट्रा फील्ड एंड दैट नेम ऑफ द फील्ड इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन. ओके, सो आई field is there, right? So information element IE field is there, so that you must have to draw inside of a MAC layer. Okay? Otherwise the MAC layer is also become a sim. Okay? Then we'll go for IEEE 1901.2a. This is only single standard that is considered that is what a wire standard which is going to be useful for the constraint devices. ये वायर्ड है, इतना ध्यान में रखो. अभी आपने देखा था IEEE 802.15.4 E, G, okay, as well as whatever the other standard that we are looking is nothing but IEEE 802.11 A, G, B, N, H, AC, AN, AH. okay, ये जो स्टैंडर्ड है वाईफाई स्टैंडर्ड है वो एक्चुअली, सो these are the wireless. In most cases you must have to go for the wireless technologies itself, or nowadays we are not going to use IEEE 1901.2a, but जहाँ पे वायर्ड डेटा ट्रांसमिशन आएगा आपका, सो एट द टाइम यू मस्ट हैव टू गो फॉर IEEE 1901.2a. इतना ध्यान में रखो. सो दिस इज एन, अभी ए वर्जन दिया है, इसका मतलब पहला कुछ ना कुछ तो भी रहेगा. सो दिस इज एन सिंपली अपडेट टू द ओरिजिनल 1901.2 standard. So 1901.2a is the standard for narrow band power line communication. Okay, narrow band power line communication, instead of just think narrow band की जगह पे broadband consider करो. broadband का मतलब क्या है आपका, डेटा स्पीड जो रहेगा, ओके, डेटा स्पीड जो है वो कंपैरेटिवली आपका हाई रहता है. सो अगेन एज इट इज़ द वायर्ड वन, वी कैन हैव द data speed as a high with the low power consumption, but it is limited to the range itself. Okay, so this 1901.2a is the standard for NBPLC, narrow band power line communication, and which is came in the market in the 2013. okay, अगर ये डायग्राम आपको याद रहती है, दिस डायग्राम रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन क्राइटेरिया, इसके अंदर सारी चीज़ें है, देखो. ओके, सो हियर वी कैन हैव 1901.2. उसके पहले हमने डिस्कस किया 802.15.4. ओके, उसके बाद में हमने डिस्कस किया 802.15.4G एज वेल एज E. उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे 802.11 AEH, दैट इज नथिंग बट द वाईफाई. ओके, then we look for the LoRaWAN, okay, as well as the different LTE techniques, right? Yes, so
this 1901.2a is the wired technology, okay, that you must have to again keep in mind. This is only the technology that is a wired technology, okay, wired technology, wired communication होता है, वायरलेस नहीं है इसके अंदर, but still it uses the same physical layer frame as well as the MAC layer frame. So it provides the narrowband spectrum for low power, long range and resistance to interference. अभी वायर्ड कम्युनिकेशन है तो इंटरफेरेंस आता ही नहीं है, बीच में कौन सा डिवाइस नहीं है तो एक आधा हिडन डिवाइस का भी प्रॉब्लम नहीं आता उसके अंदर, बिकॉज यू आर यूजिंग द वायर्ड कम्युनिकेशन. सो it's have the resistance to the interference, so very less kind of interference is there, so there may be a very less chances for the data loss. It provides a narrow band spectrum for a low power, okay, low power as well as for long range, जितना वायर ज़्यादा और long range kind of a data communication. So this kind of a technology can be used inside of a smart metering, okay, cable through meter reading देना है आपका, then distribution automation, okay. These example are maybe same as that of your previous example, but this technology can be implemented, okay, or the previous technology can be implemented into the same example. So smart metering, distribution automation, which is mostly going to be used in the automobiles or industry itself, then the public lighting, electric vehicle charging, microgrids, as well as the renewable energy, okay, renewable energy. So this is the part from the previous, right. Then so whatever the applications of 802.15.4 in the same application, this is going to be used, okay. उसके अंदर भी आपका IEEE 1901.2a is going to be used. So standardization and alliances, so this is again IEEE standard. उसके लिए हर एक स्टैंडर्ड के लिए उनके खुद के वर्क ग्रुप है. वर्क ग्रुप्स आर नथिंग बट द ग्रुप ऑफ पीपल which are working on that particular technology. So this is published actually in the November or in the late 2013, November 2013 में publish हुआ use purpose के लिए, and it's having the home plug alliances which is responsible for the advertisement and utilization of IEEE 1901.2a standard, okay, or communication standard. So this standard can utilizes उसकी physical layer अगर देखोगे, so it is basically operated into the frequency band of 3 to 500 kilohertz, 3 to 500 kilohertz, okay. So this specification, that is 1901.2 specification, includes the support for CENELEC A and B bands, okay, US FCC low and FCC above CENELEC, as well as ARIB bands, okay. अभी ये जो बैंड्स है, so these are nothing but the different, फ्रीक्वेंसी रेंज तो सेम है, लेकिन ये जो कंपनी या ये जो एसोसिएशंस है, okay, all these are nothing but the government association belongs to the different countries. So as they are belongs to the different countries, that indicates this 1901.2 is widely used into the different countries for the communication, okay. So this is going to be utilized the frequency band in the range of 3 to 500 kilohertz. पहला वाला देखा था हमने, so that can work in the range of 2.4 gigahertz, and उसके सब बैंड्स थे आपके पास में, okay. बट अब ये तो 2.4 गीगाहर्ट्ज में यूटिलाइज नहीं होने वाला है आपका. दिस इज गोइंग टू बी दिस स्टैंडर्ड इज गोइंग टू यूटिलाइज ओनली the 3 to 500 kilohertz frequency spectrum, okay, and this specification is going to be widely used. So CENELEC क्या है? CENELEC is nothing but the European Committee for Electrotechnical Standardization,
ओके। सो यूरोप कंट्रीज़ के अंदर वो यूज़ हो रहा है। सो FCC अगेन, अभी ये जो सिनेलैक है ना, सो इट इज़ फ्रेंच नेम है उसका, कमिटी फॉर ऐसे कुछ भी है, कमिटी फॉर इलेक्ट्रो एंड नॉर्मलाइजेशन, ऐसे कुछ तो भी लॉन्ग फॉर्म है। सो वो फ्रेंच वर्ड है, उसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, सो दैट सिनेलैक इज नथिंग बट द यूरोपियन कमिटी फॉर इलेक्ट्रो टेक्निकल स्टैंडर्डाइजेशन। देन FCC is nothing but the Federal Communication Commission, okay, which is going to be utilized inside of a United States. And then ARIB is nothing but the Association for Radio Industries and Business, and it is going to be used inside of Japan. Okay, they are having their own range. So the range, so if you just go for the Sinelac, so Sinelac can have the different types like Sinelac A, B, C and D, while as 1901.2 specification supports the Sinelac A as well as the Sinelac B band. So if you just go for the Sinelac A band, so it's having the frequency from 35 megahertz to 90. So that may ranges 30 to 35 and 90 to 95 ऐसे range है उसकी. So basically it is 35 kilohertz to 90 kilohertz. Then B can have the range from 95 kilohertz onward to 125. Okay, so ऐसे एक स्टैंडर्ड उन्होंने यहाँ पे दे दिया कि 19.43 to 121.875, but it can be extended up to 125 because C is going to be started with the 125 and D is going to be started with the 141. So this is the Sinelac band. Okay, so that can operates in the frequency range of 3 to we can say only 3 to 150 itself. So this is the frequency band which is going to be used into the European countries, right? Then if you go for the Japanese ARIB, we can have ARIB 1 as well as the ARIB 2. ARIB 1 having the frequency range from 3 to 117.18 kilohertz, and ARIB 2 is having the range 154.687 kilohertz to 403.125 kilohertz. Okay, and again this ARIB is going to be used inside of Japan के अंदर जो रेडियो regulations है. Okay, then if you just go for the FCC की same range है. FCC low having the same range of your ARIB 1, and FCC above the Sinelac जहाँ से ख़त्म होता है उसके बाद में FCC above Sinelac. The name indicates FCC above Sinelac, and that's having the frequency range of 154 kilohertz to 487. But all these technologies are in the range of 3 to 500 kilohertz. इतना ध्यान में रखो, 3 to 500 kilohertz. So this is what the NB-PLC narrow band power line communication frequency band. Okay, so they are using the range of 3 to 500 kilohertz frequency for the transmission of the data. Keep in mind that again it is the wire technology. Okay, so wire technology, and it uses the orthogonal frequency division multiplexing in order to have what we can say large data rate. Okay, large data rate, and based on the channel condition, PH by payload size changes dynamically. Okay, अभी ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है. Based on the channel condition, okay, whether you are following this, whether you are utilizing this, based on this condition,
द PHY पेलोड साइज चेंजेस डायनामिकली। ओके, अब PHY का अगर डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ तो PHY के डायग्राम के अंदर है हमको प्रीमेबल, स्टार्ट फ्रेम, डेलीमीटर, then the PHY header, and here we are having the data, the simple diagram representation. So if I just consider that this diagram, premable, start frame, delimiter, PHY header, and here we are having the PHY service data unit. Okay, so here based on the channel condition PHY payload size changes dynamically, therefore the MAC sublayer segmentation is implemented. अब देखो, ओके, ये कंसेप्ट देखो, अभी इसकी साइज चेंज हो रही है आपकी, बराबर है, इसकी साइज कभी कम रह रही है, कभी ज़्यादा रहेगी, बेस्ड ऑन द व्हाट काइंड ऑफ ए चैनल दैट यू आर गोइंग टू बी यूटिलाइज. सो अब ये जो डेटा है आपका, अगर ये फिक्स लेंथ डेटा अगर कंसिडर कर देते हो आप, ये फिक्स लेंथ इसका मतलब यानी उतने अमाउंट ऑफ के डेटा आपका सेंड कर रहे हो, बट ये वाला ये फिजिकल डेटा यूनिट जो है PSDU है, उसकी साइज़ कम ज़्यादा हो रही है. सो समटाइम्स इट इज़ ग्रेटर, समटाइम्स इट इज़ लेसर. सो एज वी आर हैविंग द लेसर स्पेस, सो यू मस्ट हैव टू गो फॉर द सेगमेंटेशन ऑफ दिस मैक लेयर. मैक लेयर के अंदर सेगमेंटेशन होता है. ओके, इसका मतलब मैक लेयर के अंदर ही आपको डेटा डिवीजन करना है, ये चीज़ ध्यान में रखो. दिस इज़ व्हाट ओनली द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दैट यू मस्ट हैव टू सी इनसाइड ऑफ IEEE 1901.2a. Okay, so based on the channel condition PHY payload size changes dynamically, therefore the MAC sublayer segmentation is going to be implemented. वो आपको करना पड़ेगा, मैक सब लेयर के अंदर ही या मैक लेयर के अंदर ही आपको सेगमेंटेशन करना है. ओके, सो मैक लेयर, सो व्हाट दिस मैक लेयर कंसिस्ट ऑफ? द मैक लेयर ऑफ 1901.2 इज बेस्ड ऑन IEEE 802.15.4 मैक फ्रेम. सेम खाली चीज़ें क्या क्या है, ओनली वन field is added over there. That field is nothing but the segment control. उसके बाद में देखो फ्रेम कंट्रोल ऑलरेडी था आपके पास में, सीक्वेंस नंबर इज ऑलरेडी देयर, देन दिस इज द एड्रेसिंग काइंड ऑफ ए पार्ट. ओके, ऑक्सिलरी सिक्योरिटी हेडर ये भी ऑलरेडी है, इंफॉर्मेशन एलिमेंट ये भी आपके पास में था, फ्रेम पेलोड ये भी ऑलरेडी है, एंड फ्रेम चेक सीक्वेंस ये भी आपके पास में ऑलरेडी था. ओके, सो दिस इज द मैक हेडर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन MHR, एंड दिस इज द मैक पेलोड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द MPDU. ओके, मैक प्रोटोकॉल डेटा यूनिट. एंड सो पेलोड कंसिस्ट ऑफ सिंपली द डेटा इट्सेल्फ, एंड दिस इज द मैक फुटर. ओके, अब ये जो सेगमेंट कंट्रोल है, सो दिस पर्टिकुलर बिट्स और दिस पर्टिकुलर फील्ड इंडिकेट्स वेदर द सेगमेंटेशन इज देयर और नॉट, एंड इफ द सेगमेंटेशन इज देयर, सो विच फ्रेम इज द लास्ट फ्रेम. ओके, सेगमेंटेशन यहाँ पे हो रहा है, सिंपली वी कैन से द फ्रेगमेंटेशन इज देयर. सो एज द फ्रेगमेंटेशन इज देयर, सो यू मस्ट हैव टू डू द रीअसेंबली ऑन द रिसीवर साइड. Whenever you are doing the reassembly at the receiver side, you can just find out, okay, based on the sequence number itself, based on the sequence number you can just collect the data and manage the data in terms of a increasing order. पहला वाला अगर पैकेट रहेगा तो उसके लिए 0 रहता है नंबर. ओके, उसके बाद में 100 MB आप 100 KB डेटा सेंड किया आपने, तो नेक्स्ट वाला जो रहेगा उसका सीक्वेंस नंबर स्टार्ट होता है 101 के साथ में. ओके, बट उसको एक कॉमन फील्ड रहेगा, छोड़ दो वो कॉमन फील्ड क्या है वो बाद में देखेंगे. तो अकॉर्डिंग टू दैट अभी आपको समझ में आना चाहिए कि लास्ट वाला पैकेट कौन सा है इसमें का. ओके, यानी कहाँ पे आपको स्टॉप करना है.
फर्स्ट मिल गया, लास्ट मिल गया, तो उसके अंदर का डेटा हम सारा रीअसेंबल कर सकते हैं ऑन द रिसीवर साइड. सो दैट पार्ट में अगेन कवर्ड इन लिटिल बिट इन द डीप मैनर इनसाइड ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क. ओके, जहाँ पे सेगमेंटेशन वगैरह आता है आपको कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर. बट द ओनली एक्स्ट्रा फील्ड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ अ मैक लेयर of 1901.2 is the segment control. Okay, and these segment control fields give the information related, okay, information related to the segmentation that has been done inside of a MAC layer. In addition to that, the with the use of features from IEEE 802.15.9, okay, the another standards from the IEEE. So with the use of this, right, the IE field, okay, IE, that is the information element field of 1901.2 supports the key management protocol and the SSID. Okay, key management protocol is going to be utilized for transmission of the key that has been generated, that is 128. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम AES यूज़ करते हैं, ओके, AES एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम, ओके, at that time you are going to generate the key, okay, based on the key length. We are having the different types of AES 128, AES 256, AES 5112. basic is AES 128. so उसकी की साइज क्या है, 128 bit long, as it is the symmetric key kind of a cryptography. so symmetric का मतलब ऐसा होता है कि the same key will be used for the encryption purpose as well as the decryption purpose. generally, in general, सेम की का मतलब देखो, अगर मैं अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट करता हूँ बाय मूविंग देम बाय अ 5 पोजीशन, ओके, इसका मतलब ए की जगह पे ABCDE रहेगा. सो ए विल बी रिप्रेजेंटेड एज एन ई. तो मेरा की क्या है, द की इज नथिंग बट 5 bit shifting towards either left or towards either right, depends on what kind of a scenario. so अब उसको मुझे डिक्रिप्ट करना है, तो वैसे ही मुझे रिवर्स ऑर्डर में करना पड़ेगा. ओनली शिफ्टिंग कर रहा हूँ तो रिवर्स ऑर्डर में, अगर ये लेफ्ट साइड में शिफ्टिंग कर रहा हूँ तो रिसीवर साइड में डिक्रिप्ट करते टाइम में राइट साइड में मुझे शिफ्ट करना है. बट you have to shift the element or the character by a 5 position only, by 5 position only. so symmetric key cryptography के अंदर encryption के लिए जो की यूज होती है, the same key will be used inside of same key will be used for the decryption itself. okay, तो मैंने आपको लास्ट टाइम में भी बताया था, तो वहाँ पे जो है आपको जो की आपने encryption के लिए यूज़ की है, तो वो डिक्रिप्शन के भी लिए सेम की यूज़ करना है. सो यू मस्ट हैव टू से, और दैट की मस्ट बी नोन टू द रिसीवर. अब वो की भी आपको सेंड करनी पड़ती है. अब वो की आपको सिक्योरली सेंड करना है, सो दैट फॉर दैट रीजन वी मस्ट हैव टू यूज व्हाट, की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरली ट्रांसमिटिंग द की which is used for encryption as well as the decryption. So that SSID is related to the network itself. You know the meaning of the SSID. Okay, these are the features. That is what the key management as well as the SSID management is supported inside of 802.15.9. okay, but the metadata field, जैसे मैंने आपको बोला था कि IEEE 802.15.4e के अंदर this IE field only provides the information related to data. In addition to that, in order to provide the security, more security, okay, the IE field of IEEE 1901.2 supports the key management protocol in order to provide the security to the keys. Okay, so that you must have to look inside of a MAC layer of
IEEE 1901.2, the key management protocol as well as the SSID, that are nothing but the features from IEEE 802.15.9 standard. ओके, अब इस डायग्राम में ये फ्रेम कंट्रोल क्या है, सीक्वेंस नंबर क्या है, ऑल दिस थिंग्स आर ऑलरेडी नोन टू यू. अगर नहीं पता है तो मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा मेरे प्रीवियस लेक्चर का, तो उसके अंदर देखो. सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ए फ्रेम कंट्रोल, वैसे भी हमने देखा था इसी लेक्चर में. देन सीक्वेंस नंबर, डेस्टिनेशन पैन आइडेंटिफायर, डेस्टिनेशन एड्रेस, source pan identifier, source address, what is the actually use of the auxiliary security header, then information element is there, and that's having the ref size. So whatever the number that has been put over the field, that is 3, 2, 1, 0 or 2, 0 or 2 or 8, 0 or 2, 0 or 2 or 8, indicates the number of bytes that has been utilized by this field. Okay, that has been utilized by this fields. Then the topology that is going to be utilized inside of IEEE 1901.2 is again the mesh topology, but it uses the mesh topology based on the neighboring connection. Okay, so if I just consider this is the transformer. Okay, so this is going to be connected. This is going to be connected, or this device is going to be connected with the neighboring devices. Okay, or all neighboring devices. Then the devices are again, the neighboring devices are again connected to their neighboring devices. So in this way you are just going to occupying, or you are just going to completing the mesh topology inside of 1901.2. Okay, and here you can have the hop. Okay, so if the device is directly connected to the neighboring device, then the distance is nothing but the one hop. If the intermediate node is there, then the distance is nothing but the two hop, and based on the hop count you are just try to connect all the nodes. Okay, and establish, this is the tree like structure actually. Okay, one node is there which is going to be connected to the different node like this. This node is again going to be connected with the another node, like this node is connected to two different nodes. Again this is two different node, again three different nodes. This is connected to two different nodes. This is connected to the 5 different nodes, and again the sub nodes. ऐसे करके जाओगे. So the distance between this node to this node is count as an one hop. Okay, in the networking, as it is the wired, बराबर है. देखो your the routing protocols that you are going to be used for the data transmission, या राउटिंग इंफॉर्मेशन भी आपको ट्रांसमिट करनी है, तो उसके अंदर जो डिस्टेंस मेजर करता है वो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर के रेंज में नहीं होता. सो दैट डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ ए होप. इफ़ इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड, वैसे तो जीरो होप बोला जाता है, बट इट इज़ वन होप बिकॉज you must have to pass this line. Okay, if it is indirectly connected, so कितने सारे लाइन्स है या कितने सारे वायर्ड कनेक्शन है वहाँ पे, यहाँ पे एक या यहाँ पे एक, सो 2 हो, उसका डिस्टेंस हो गया आपका 2 हो. सो mesh topology is going to be implemented based on the neighboring connectivity inside of IEEE 1901.2a standard. And again it uses the security that is nothing but the AES with 128 bit की सेम, यानी प्रीवियस जितने सारे टेक्निक देखे थे हमने, 802.15.4 देखा है, उसके बाद में G देखा उसका वर्जन, E देखा है उसका वर्जन. ऑल दीज आर यूटिलाइजिंग द सेम सिक्योरिटी algorithm or same encryption algorithm, that is AES, and the key size is also same. But the additional thing is that in 1901.2 it supports the key management protocol. Okay,
So how to manage the key or how to transfer the key securely from source to destination, that is managed by using the key management protocol. And these features is incorporated by utilizing some features or by utilizing some standards from IEEE 802.15.9. ओके, अभी इसके अंदर जो चेंजेस हो गए, या की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल आपने यूज़ किया, उसके बाद में ये सेगमेंटेशन आता है, तो सिक्योरिटी के अंदर आपको क्या चेक करना है, देखो एज IEEE 1901.2 PHY फिजिकल लेयर इज गोइंग टू बी फ्रैगमेंटेड, सो सिक्योरिटी इनेबल बीट इज सेट फॉर ऑल द मैक फ्रेम. अभी मैक फ्रेम देखेंगे, मैक फ्रेम के अंदर फ्रेम कंट्रोल है आपके पास में. फ्रेम कंट्रोल के अंदर हमने एक देखा था बिट, यहाँ पे फिर से मैं बिट भी दिखा देता हूँ आपको. दैट बिट इज नथिंग बट द सिक्योरिटी इनेबल बिट. ओके, तो अब ये स्टेटमेंट क्या बोलता है आपको, सिक्योरिटी इनेबल बीट इज सेट फॉर ऑल द मैक फ्रेम. ऑल द मैक फ्रेम क्यों बोला है, बिकॉज आपकी फिजिकल लेयर के डेटा की साइज कम ज़्यादा हो रही है. ड्यू टू दैट वी मस्ट हैव टू डू द सेगमेंटेशन ऑफ द मैक डेटा. सो मैक में अब जैसे लेट सपोज फॉर करंट कम्युनिकेशन मेरा फिजिकल डेटा यूनिट 80 MB हो गया. मैक लेयर में तो ज़्यादा बैठता था, तो मैक लेयर में ज़्यादा था आपका, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा. लेट सपोज दैट इज़ 100 MB, so we are not able to send the 100 MB at a time, so we are just going to divide it into the 80 MB plus 20 MB. Remaining fields are going to be padded. Okay, इतना ध्यान में रखो. Okay, so security bits for अभी मैक फ्रेम कितने हुए आपके पास में, 2 different MAC frames are there. Similarly, 2 physical frames are also there, but for these 2 MAC frame you must have to enable this security bit. So security enable bit is set for all the MAC frame. जितने सारे MAC frame रहेंगे उतने सारे MAC frame के अंदर आपको वो बिट सेट करना है. ऐसा नहीं है कि पहले वाले मैक फ्रेम के अंदर सेम डेटा है तो आपने पहले वाले मैक फ्रेम के अंदर सिक्योरिटी बिट इनेबल किया, बाकी के लिए नहीं इनेबल किया. सो दैट विल क्रिएट द लार्ज कन्फ्यूजन, क्योंकि खाली एक ही मैक फ्रेम के लिए आपका इंक्रिप्शन एल्गोरिदम अप्लाई होगा. सो डेटा इंक्रिप्शन विल बी डन बिफोर द पैकेट सेगमेंटेशन, एंड वट एवर द डेटा दैट हैज, यानी पैकेट सेगमेंटेशन डिवाइड होने से पहले ही ओरिजिनल डेटा के ऊपर ही आपको डेटा इंक्रिप्शन करना है. अब पैकेट सेगमेंटेशन हो रहा है, इसका मतलब अलग अलग से जो मैक फ्रेम मिल रहे हैं उसके अंदर जो अलग अलग डेटा आप रख रहे हो, दैट इज़ द एनक्रिप्टेड डेटा, दैट इज़ द एनक्रिप्टेड डेटा. इतना ध्यान में रखो. सो ऑन द रिसीवर साइड डिक्रिप्शन विल बी डन आफ्टर द पैकेट रीअसेंबली. पूरा पैकेट रीअसेंबली किया, पूरा डेटा मेरे पास में कलेक्ट हो गया, ओनली द डेटा. ओके, हेडर जो ऐड होगी वो मैं रिमूव कर दूंगा. उसके बाद में जो ओरिजिनल डेटा मुझे मिलना है या मिला है उसके ऊपर मैं डिक्रिप्शन एल्गोरिदम अप्लाई करने वाला हूँ. सो दैट इज़ व्हाट द एक्स्ट्रा थिंग्स दैट यू मस्ट हैव टू कंसीडर एज एन सिक्योरिटी कंसर्न इन द 1901.2 स्टैंडर्ड. ओके, अभी इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है या सेगमेंटेशन होता है. ड्यू टू दैट, ओके, बिफोर डूइंग द सेगमेंटेशन you must have to apply the encryption on the original data, and on the receiver side after receiving all the पैकेट रीअसेंबली का मतलब ही है सारे के सारे पैकेट आ गए, उसमें से डेटा मैंने निकाल लिया. सो वो जो डेटा मुझे मिल रहा है उस डेटा के ऊपर मुझे डिक्रिप्शन करना पड़ेगा. ओके, एंड द कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजीज टू दिस IEEE 1901.2, there are 2 different competitive technology. The first one is nothing but the G3 PLC, and the second one is nothing but the Prime. Now these are the standard of ITU. So ITU G9903 and ITU G9904 standard. Okay, so these 2 technologies are a competitive technology, or we can say the wire technology that is going to be used instead of 1901.2 standard. Okay, so this is all about 1901.2 standards. Okay, so we'll discuss IEEE 802.11 AH. Basically it is the Wi-Fi standard.
ओके। अब इसका ओरिजिनल आपका IEEE 802.11 है, उसके बाद में A आया, उसके बाद में G इज़ देयर, D इज़ देयर, N इज़ देयर, AC इज़ देयर, AN इज़ देयर, AH इज़ देयर। अभी उसमें से हम AH पढ़ेंगे, या बुक में AH दिया है, हाईएस्ट वर्जन तब बुक का था। अब AH की जगह पे AJ इज़ देयर, AY इज़ देयर, BG इज़ देयर, BZ इज़ देयर इन द मार्केट। Okay, so we'll look for IEEE 802.11 AH into the next lecture. So we'll stop here, and in the next lecture we'll discuss about the IEEE 802.11 AH. Okay.